Hello students, welcome to Mathematics of Class 4, Chapter 5, The Way the World Looks. Students, today let's start a new chapter. So, this chapter 5, The Way the World Looks, is not going to come in exam. Okay? So, this chapter you are going to learn because of your self study. आपकी सेल्फ स्टडी के लिए मैं चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स? And this chapter concept is related to the next year syllabus also. So you must learn this chapter also. Okay? So let's start our chapter. Now students, you open the textbook page number 52. So you must understand this also carefully. You read also and learn also properly. So students, here given the Gappu's air journey. See, it's very interesting chapters. It's very knowledgeable also. So here Gappu's journey. Who is Gappu? Gappu कौन है? Gappu is a little mouse. You can see in your book here. Okay? It is a little mouse. So Gappu was a brave little mouse, right? So one day he saw a children playing with a huge gas balloon. So एक दिन वो देखता है घर में कि बच्चे गैस बलून से खेल रहे हैं. Have you seen gas balloon? Okay, so गैस बलून होता है तो वो अपने आप ऊपर जाता है. Okay, so the balloon went up and touched the roof. So because of gas, it went up and touched the roof. So Gappu was thrilled. He got an idea. So गप्पू को लगा कि ये क्या है. So when next day when children was not at home, he went up with the strings and reached to the balloon. So वो strings पे से चढ़ के वो बलून के पास पहुंच जाता है. ठीक है. So he climbed on the string and it reached to the balloon. Okay. He could see the blades of fans from above. So when it reached to the balloon, it can see that the blades of fan की जो blades है वो देख रहा है. So it's so dirty. So when it's go up, so it can see that the blade of fans are very dirty. So students, what you can understand here? क्या सीखने को मिल रहा है? So here the mouse is on top of the roof. Okay, so it can see the whichever things are down. So that means it talk about the top view. यानी हम जब हम कभी कोई बिल्डिंग में रहते हैं, so when we see from the our apartment, so हम नीचे का जो देखते हैं that is our the top view. Okay, so बिल्डिंग के बाहर देखोगे when the car is parking there, so you can see the top view of the car. Okay, so when the mouse is on top, so it can see the whole room clearly because it's very small one, so it can't see the whole room in one look. जब वो टॉप पे है तो वो सारा रूम को एक ही बार में पूरे से देख सकता है. सो दैट इज उसे क्या कहते हैं? टॉप व्यू है. जो माउस ऊपर से देख रहा है वो टॉप व्यू है. सो दैट इज द टॉप व्यू ऑफ द रूम. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नाउ गप्पू लुक डाउन. इट कुड सी द बेड, चेयर. सो वो जो ऊपर से देखता है तो उसको ये सारी चीज़ें दिख रही है क्योंकि वो गैस बलून के थ्रू ऊपर है रूफ के पास. सो व्हाट इट कैन सी? It can see the chair, then bed, one table, okay, see all the things, bottle, jug, fruit, etc., which is lying on the room. Okay students, can you see in the photo? So it can see that Chinky, that stupid Chinky is look for cheese. So उसको ऊपर से चिंकी भी दिखाई देती है. Who is Chinky? Chinky is an ant. चिंकी क्या है? ant है. उसको छोटी सी चिंकी भी दिखाई देती है. Stupid चिंकी is looking for cheese. Can't even see it cap on the top of the jug. So वो बोल रहा है, what is said the mouse, कि चिंकी को जग के ऊपर रखा हुआ चीज़ भी दिखाई नहीं दे रहा है. Obviously चिंकी is very small. That means ant is very small, so it can't see that. But why mouse can see? It is also small, but mouse is on top of the floor. So it can see the whole view of the room, but Chinky is down, so it can't see the cheese is kept on the top of the jug. जग के ऊपर जो चीज़ रखा है वो चिंकी नहीं देख पा रही है. Let's see on the next page, students. See here. Can you think why Gappu could see the cheese on the jug and Chinky could not? That I already told you. Okay, कि जो गप्पू कहाँ पे है?
टॉप पे है, so it can see the whole view of the room. But Chinky is down, so it can't see because Chinky is very small and the cheese is kept on the jug. जग के ऊपर रखा हुआ है, so it is not possible to see with the Chinky. Right, students? Understood? Okay, now let's see. Just then a strong wind pushed the balloon out of the room. Okay, so gas balloon hai, it can move with the wind here and there. So when the strong wind come, the balloon moves out of the room. वो room से बाहर चला गया. When the balloon flew up, Kappu started going up in the sky. As he looked down, he could see his house. यानी वो रूम से बाहर चला गया और वो गैस बलून है, सो इट कैन गो अप हाई एंड हाई, ओके, विद द विंड. सो वो देख रहा है घर के बाहर जाके उसको बहुत सारी चीज़ें नीचे दिखाई दे रही है. एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड द हाउस. यानी अब वो जो घर से बाहर निकल रहा है तो उसको अपने घर के आसपास की सारी चीज़ें दिखाई दे रही है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Now, so what it can see, the park, the Gurudwara, the railway line, a sweet shop and the Suhasini's house with big water tank on its roof. यानी ये जो big water tank है ना वो किसका घर है? सुहासिनी का. Right? Here is the Gurudwara, right? Park है, railway line है. Can you see this railway line? Okay, this all the things which is near to its house. So उसको दिखाई दे रही है. Because why? It can see it's a very small, mouse is very small because mouse is on top. वो बलून के साथ कहाँ पे है? ऊपर है, टॉप पे है. So that shows the top view of all these things. When the mouse is on top, देखो माउस जैसे कि बाहर स्काई में है, so this picture shows the top view of all the objects. Okay, so जो ऊपर से वो देख रहा है वो सारे एरिया का क्या व्यू है. Clear students? Now let's see the next one. Who is that on the railway track? It can see that यहाँ पे railway track पे भी कोई है. Okay? Oh, is it that a fat cat Monty? यानी वो बड़ी वाली cat है, उसका नाम क्या है? Monty. From here it looked like a big white mouse. उसको लग रहा है कि ऊपर से तो जैसे कि छोटा माउस नहीं हो, white ऐसा दिख रहा है. Students, so why this happen? The cat is very big and fatty also, but when the Gappu is on top, so why it can see is a very small like a white mouse. Why it's happened? Because students, when the thing is far from us, the distance is more from us, so it's look like a very small. ओके क्योंकि गप्पू बहुत ऊंचाई पे है इसलिए उसको नीचे की सारी चीज़ छोटी छोटी दिखाई दे रही है. समझ में आया? जो मोंटी कैट है वो गप्पू से बहुत दूर है, सो इट लुक लाइक अ माउस. क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? ओके, सो गुरुद्वारा, दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर द अमरजीत गोज एवरी डे. तो यहाँ पे जो गुरुद्वारा है वो भी दिख रहा है जिससे जहाँ पे अमरजीत डेली जाता है. ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ये चैप्टर में हम व्यूज़ के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट व्यूज़ के. टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, बैक व्यू. दिस ऑलरेडी यू लर्न इन द थर्ड स्टैंडर्ड ऑल्सो, बट हियर वी विल लर्न समथिंग न्यू ऑल्सो. Okay students, now you turn the page 54. So on the next page students, imagine how your classroom look from above. Try to draw and make the benches, blackboard, doors, windows, etc. Now students, आपको यहाँ पे क्लासरूम का टॉप व्यू ड्रॉ करना है, बट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल. तो स्टूडेंट्स यू कैन ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ योर हाउस. ओके, आप अपने टॉप व्यू आपके हाउस का भी ड्रॉ कर सकते हो कहीं जगह ऊपर से. आप इमेजिन करके कि योर हाउस हाउ इट लुक लाइक फ्रॉम द टॉप. ओके, यू कैन ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ द कार ऑल्सो व्हेन यू आर स्टेइंग इन एन अपार्टमेंट, okay, or in any building, so you can see the vehicle which is parked. So उसका भी आप top view, not only car, you can draw the top view of the scooter also. Okay students, so you can draw any top view of an object. Clear students? Now let's the next one. What happened with the Gappu now? Now the balloon went up and up. Gappu kept wondering how big the world is. तो गप्पू को तो सरप्राइज लग रहा है कि world is very big. Okay, because it never gone like this way. So now he could the lots of houses, streets, roads and buses. अब उसको यहाँ पे बहुत सारी हाउस दिख रहे हैं, रोड्स दिख रहे हैं, बसेस दिख रही है. राइट स्टूडेंट्स? सो इस
You see here, it can see the train also. It look like a big box. It's a box की तरह उसको लग रही है, right? And here, these are the cars, buses, like so small from the here. यानी ऊपर से उसको कार और buses बहुत छोटी लग रही है. And people just like a ants. People उसको ants की तरह लग रहे, इतने छोटे छोटे लग रहे हैं. Why this happen? Because Gappu is on top, and this is the top view of all this object. Clear students? समझ में आ रहा है? So why it's happened? Why the things are looking very small? Because when the distance is very far from us, so we can see the things is very small. जब distance हमारे से बहुत दूर होता है तो हम उसको छोटे छोटे देख सकते हैं. Okay students, समझ में आ रहा है? Now let's see the next one. Suddenly there was a loud sound. फट, अचानक से आवाज़ आया फट करके, यानी मीन्स बलून क्या हो गया, बस्ट हो गया, राइट. एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन. जैसे बलून बस्ट हो गया वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया. एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर बिगर एंड तब उसको जब नीचे आता गया तो उसको सारी चीज़ें बड़ी बड़ी दिखती गई और वो गिर गया वहाँ पे. गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक. वेर इट फेल्स, इट फेल ऑन रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक पे गिर गया. He ran to save himself from the cruel Monty. वो कैट से बचने के लिए वो भागता है, ठीक है. Now let's see. When Gappu saw the railway track from above, it looked like this. जब गप्पू टॉप पे था तो उसको रेलवे ट्रैक कैसा दिख रहा था? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया है. This is the top view of the railway track because Gappu is on top. You can see from the top, so that is a top view of the railway track. ऊपर से रेलवे ट्रैक को देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा स्टूडेंट्स. Now students, open the page number 55. Now students, what is this? But when he fell on the track, the railway line looked like this. जब वो नीचे गिर गया तो उसको रेलवे लाइन ऐसी दिख रही थी. Why students this happened? पहले हमने देखा कि यहाँ पे उसको रेलवे ट्रैक का ये टॉप व्यू दिख रहा था. जब वो नीचे गिर गया तो उसको ऐसा दिख रहा है. Why happen? See, things look so different when you look at from the top and from the side. यानी ऊपर से जब आप देखते हो तो उसका व्यू डिफरेंट होता है. अब वो जो नीचे गिर गया तो उसका साइड व्यू बोल सकते हैं, वी कैन से द फ्रंट व्यू ऑल्सो, वो डिफरेंट लगेगा, ठीक है. सो इट्स डिपेंड ऑन द व्यू. हम चीज़ को कहाँ से देखते हैं उसके ऊपर से आपको पता चल गया जाएगा कि विच इज़ द साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Look at this picture and discuss why things look wide and big at the end but narrow and small at the other hand. Okay, so what is our question students? आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स दी गई है. यहाँ this is the railway track and here the candles are given. So students, what is the questions? Why things look wide and big at this end? यानी आपको आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो क्यों वाइड दिख रही है. एंड नैरो एंड स्मॉल एट द अनदर एंड. आप दूर से देखोगे तो ये क्यों नैरो और स्मॉल दिख रही है. व्हाट इज़ द रीज़न स्टूडेंट्स? क्या रीज़न हो सकता है? रेलवे ट्रैक का डिस्टेंस सेम ही होता है, आप देख सकते हो ना, रेलवे ट्रैक सेम ही डिस्टेंस होता है. ऐसा नहीं कि एक जगह से वाइड है दूसरी जगह से नैरो है. बट व्हेन आई एम स्टैंडिंग हियर, सो वाई दिस आर वाइड एंड दैट व्यू इज़ नैरो. वाई दिस हैपन स्टूडेंट्स? बिकॉज स्टूडेंट्स, द थिंग्स विच आर क्लोज टू अस, यानी जो चीज़ हमारे नज़दीक होती है, दैट थिंग्स वी कैन सी अ वाइड, एंड द थिंग्स विच आर फार फ्रॉम अस, दैट थिंग्स वी कैन सी द नैरो और स्मॉल. इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, सो दिस थिंग्स आर वेरी क्लोज टू अस, these things are very close to me, so this is the wide, okay. But this railway track is very big, so in another hand it looks like very small because that is very far from me, okay. So आप ये observation कर सकते हो. whenever you go to the railway station, you can observe it. You stand on one side and see that my side is very wide, and when the railway track goes on, so another side is very narrow and small because it's very far from you, okay students. You can observe yourself. The same way in the candle are also be placed in the same symmetrical lines, in the same line, with the same distance. But if I am standing here, so this portion is very wide, and another end this is very narrow and small. Clear students? समझ में आ रहा है? Understood the reason? Okay, now let's see the next one. Two views of the same pose. यहाँ पे आपको एक व्यू दिया गया है,
उसके ये ऑप्शंस है, आपको उसके साथ करेक्ट व्यू के साथ मैच करना है. सी दिस गर्ल इज डूइंग द योगा, सो दिस योगा पोज ऑन द टॉप व्यू. ये जो योगा पोज दिया है वो टॉप व्यू से लिया गया है, ठीक है, ऊपर से लिया गया है. तो इसमें से कौन सा करेक्ट वाला योगा पोज है जिसको ऊपर से लिया होगा, सो वी कैन गेट दिस काइंड ऑफ पिक्चर. कौन सी करेक्ट पोजीशन है इसमें जिसका टॉप व्यू ये वाला बनेगा. सो व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स, क्या आपको क्या लगता है कौन सा व्यू हो सकता है? विच वन इज दिस? सी यू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. फर्स्ट वी थिंक अबाउट द फेस. कैन यू सी द फेस? सो फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, फेस कौन से साइड पे है? लेफ्ट साइड. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो फ्रंट में है, आगे है, हियर राइट साइड, हियर राइट साइड. Only this one face is on left side. Left side means in your left hand side, right students? And the posture is also same like this. The hands is up on position. That means this is the correct yoga pose, which the top view is this one. Okay, ये yoga pose है जिसका top view आपको ये दिख रहा है, ठीक है. So this is the correct option. So we have to put a tick on it. Clear students? समझ में आ रहा है? So ये जो वाला yoga pose है, ओके, ये टॉप व्यू है, ये करेक्ट पोजीशन ये है, ये फ्रंट व्यू है, आगे से लिया गया है, और ये ऊपर से लिया गया है, तो ये टॉप व्यू है. ओके, दिस आर नॉट द करेक्ट. लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज 56. सी हियर 2 balls आर गिवन. सो स्टूडेंट विच इज द करेक्ट वन? दिस बॉल शोज द टॉप व्यू ऑफ द बॉल्स, ओके, एंड दिस बॉल्स व्यूज इज ऑन अपसाइड डाउन, मीन्स वी कैन से बैक व्यू. ओके, now what is our question? In which photo are the balls upside down? So upside down means it shows the back view. So this second one position shows the upside down balls. उल्टे है ना ball, upside down means उल्टा. We see this shows the back view of the balls. ये पीछे का व्यू दिखा रहा है, so we can say the back view. And this shows the top view. ऊपर से दिख रहा है ना ball. So यहाँ पे हमारा question क्या है? In which photo are the balls upside down? So that is the second one. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? सेकेंड. ओके, सी द नेक्स्ट वन. लुक एट द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड द आंसर्स. सी यहाँ पे आपको जो दिया गया है दैट शोज द साइड व्यू. ओके, सो कैन यू आर यू क्लियर अबाउट द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड बैक व्यू ऑल्सो? ओके, सो दिस ball shows the side view. This is the side view of the balls. This is the top view and this is the back view. Right? Students, समझ में आ रहा है? Now next one. Draw lines to match the side with the top view of. यहाँ पे आपको 2 चीज़ दी गई है, उसके टॉप व्यू के साथ मैच करना है, ठीक है. What is given? A pipe and funnel. Okay. So ये जो पाइप है, ओके, ये सॉरी दिस इज द पाइप, उसका टॉप व्यू क्या होगा? ये जो पाइप है उसका टॉप व्यू क्या होगा? उसके साथ उसको मैच करना है स्टूडेंट्स. सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द पाइप, उसको मैच कर लिया, राइट. अब ये जो फनेल है उसका टॉप व्यू का क्या होगा? जो दिस वन फनेल, यानी पता है ना आपको, ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से नैरो होता है. ओके, हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ फनेल एट अ पेट्रोल पंप? ओके, अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉप व्यू. सो ये पाइप का टॉप व्यू है एंड दैट वन इज फनेल टॉप व्यू, राइट स्टूडेंट्स. So here one exercise is given. Try to draw pictures of a shoe from the side, top and front. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इमेजिन करना है, यहाँ पे आपको आपके शू का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ड्रॉ करना है, ठीक है. दिस इज योर होमवर्क, कंपल्सरी हैज़ टू डू इट. You imagine in your mind, you can put the shoes and then also you can draw it. Okay, so आप अगर शूज़ को आगे से देखोगे तो कैसा पिक्चर बनेगा, अगर ऊपर से देखोगे तो कैसा पिक्चर बनेगा, और साइड से देखोगे तो कौन सा पिक्चर बनेगा. That has to be see, otherwise imagine and then you have to draw it here. Okay students, understood? So I hope you understood the topics which I explain you. So students, this lesson is not going to come in the exam, so you will not get any PDF files related to this lesson. But students, you must learn this lesson because it's very important for the next year also. Okay students, thank you.